फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पोजीशन साइजिंग कैलकुलेशन के ऊपर। जब भी आप कोई स्विंग ट्रेडिंग करते हो और उसके अंदर आप जब ट्रेड आइडेंटिफाई करते हो बेस्ड ऑन योर टेक्निकल रिसर्च, ओके, एंड देन व्हेन यू एंटर योर ट्रेड यू हैव टू एंटर द लिमिट प्राइस और योर एंट्री प्राइस, वी कैन से दैट, एंड वन मोर थिंग्स, दैट इज द नंबर ऑफ शेयर। अगर आप एमटीएफ ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप इंट्राडे कर रहे हो, ओके, you have to decide the how much quantity you need to buy whenever you enter your trade. So that is a very interesting thing you need to understand over here, which is called the position sizing calculation, and it will decide your predefined risk. Yes friend, इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज आप जितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय करते हो उसके बेस पे ही डिसाइड होता है कि आपका ट्रेड्स का रिस्क कितना है। Yes friends, every trade here there has their own risk, okay, and that you need to decide by finding the number of shares. तो ये कैलकुलेटर बहुत इंटरेस्टिंगली मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं कि किस तरह से कैलकुलेटर काम करता है, ओके फ्रेंड्स। और आप ये वीडियो देखने के बाद आप you will not decide how much share you need to buy, but this calculator will decide how much share you need to buy. That is to be sure. Yes friend, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला, आपको लास्ट तक देखना है, बिकॉज ये देखने के बाद आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से आप नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यस फ्रेंड, तो यहां पे you can see that whenever you need to buy the number of shares, how much number of share if you need to calculate, then you required 3-4 parameters. Yes friend, and that parameter is the entry price, your stop loss and max loss. Okay, I'll cover each and every topics with the example. So let's jump with the one of the trade which I have selected for the trading purpose. Okay, and I decide to when to enter, where is my stop loss, and what is my profit target, everything. Okay, so I've gone through one example, fully examples. Okay, so you will clear about this whole questions, how much number of shares you need to buy before enter any trades. Yes friend, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेड्स है, दैट इज ऑफिस, आई फाइंड दिस ट्रेड for the technical. I normally, whenever I enter any trade, I just do the technical research, and based on that I find the entry, and I find the SL and my profit target, honestly speaking. Okay, so what I find in this trade over here, okay, so it is a one of the range bound trade. If you see over here, it goes up then goes down, this goes up and then again goes down. So in this area, okay, and this is blue line represent the 50 days simple moving average. Okay, so recently यहाँ पे एक corrections हमें देखने को मिला, okay friend, and then after what happened, after few days corrections, over here we seen the one bullish candle on the 50 days simple moving average. Okay, right, and whenever it touching to this 50 moving average, it will bounce back, so it retrace back, and over here it gives the confirmation, then higher rise candle one form. Okay, and what happened, over here one reverse pin bar form out. Okay, so this indications that panicking to the people to sell because it will goes down again, but that may be not reality. So what I decide, if it is goes up, then I'll definitely enter the trade around 525 to 525 530 levels. Okay, so this is what the trade I selected. Whatever your technical research, that is, everybody has their own strategy on research, that is okay. Okay, but whatever the trades you have some entry price you need to decide. Okay, and one more thing, you need to decide the stop loss, because whatever the strategy you are using, there is not holy grail strategy available in the world. कोई भी स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी है ही नहीं, कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है टेक्निकल चार्ट में जो आपको फेल ना कर पाए, बिकॉज सो मेनी पार्टिसिपेशन, मतलब मार्केट में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं कि आपका सेटअप फेल हो सकता है. इट शुड बी हैपन. ओके, देयर इज नो 100% guaranteed एनी ट्रेड, एंड फॉर दैट you need to decide the stop loss. Okay, because if you are wrong, then you have to exit that trade. Okay, so what I decide that in this trade, if you see this red zone, which is my stop loss. Okay, so this is my entry price, which is entry price is a 725. Okay, and my stop loss is the 689. You can see over here my stop loss. So stop loss is a 36 point from my entry price. Okay, in this trade.
Okay, so what I have to do in this calculator, and by the way, I will provide this calculator to you. Okay, मैंने नीचे WhatsApp number आपको दे दूंगा, वहां पे आप हाई कीजिए. Will share this calculator to you. No issue. Okay, so our fees. Okay, this is trade name. You need to enter the script name. Then entry price. You need to put the simply entry price. Whatever your trade. Okay, I take one example over here. So 720. Sorry, my entry price is the 725. Yeah, 725 is my entry price. Okay, you just need to write down entry price and what is your stop loss. Okay, you have to decide. See, whenever you enter the any trade, when you find any trade, you have to identify the stop loss. अगर आपको नहीं पता चल रहा है किस तरह से स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैं क्या करता हूं नॉर्मली कि ये जो कोई भी बुलिश पिन बार होता है, ओके राइट, उनके उनके जो प्रीवियस 5 कैंडल्स का जो लो होता है, let us say this is the confirmation candle which is a bullish angle, sorry, bullish pattern, okay, of the body, full body bullish candle. Okay, so 1 2 3 4 5, so which is the lowest uh, the pin. So before जो 5 कैंडल है उसका जो लोअर है, that is this candle, you know this candle, if I zoom it. Okay, so yeah, so इसके जो लो है, that is low is around 690. Okay, so 690 ने नीचे मैंने stop loss रखा है, that is 689 rupees. Okay, simply. Okay, you can decide by your strategy. Okay, 689 is my stop loss. Okay, and now important things you need to ask to yourself. Okay, how much loss I want to take in this trade. Okay, in terms of money. Okay, तो आपको कितना लॉस लेना है, लेट अस से आपको ये ट्रेड के अंदर 1000 रुपीज का लॉस लेना है, 5000 का लॉस लेना है, 10,000 का लॉस लेना है, 20,000 का लॉस लेना है, 50,000 का लॉस लेना है, 1 लाख का लॉस लेना है. दैट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क टू योरसेल्फ, बिकॉज इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड रिस्क. आप अपने माइंड को बोलते हो कि ये ट्रेड के अंदर मैं इतना रिस्क ले सकता हूं. अभी आपको ये किस तरह से कैलकुलेट, लेट अस से एवरीबॉडी हैज देयर ओन पोर्टफोलियो साइज. लेट अस से योर पोर्टफोलियो साइज इज द 5 lakhs. लेट अस से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका पोर्टफोलियो लेट अस से 5 lakhs का है. ओके, तो आपको 1% रिस्क लेना है 5 lakhs का. सो व्हाट इज 5 lakhs 1%? दैट इज 5,000. ओके, इन दिस ट्रेड, वन ट्रेड, एक ट्रेड में आपको 1% रिस्क लेना है ये ट्रेड, क्योंकि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू है, that is 5 lakhs, that is your capital, and you take the 1% risk in this trade. If you are wrong, okay, because ये जो max loss है which decide your risk, it is a predefined risk इसको बोला जाता है. So this is what the 5,000 you put over here, and this trade automatically calculate, this calculator I mean automatically calculate the 139 quantity you need to buy, and the trade price is nearly 1 lakhs rupees. Yes friend, let us say your portfolio is a 10 lakhs. Okay, you may increase the risk up to 2%. I recommended to maximum 2%, not more than 2% risk. Never take. Okay, because if you are wrong, then your 2% portfolio will be wipe out, because 10 lakhs ka 2% hota hai 20,000 rupees. Okay, so 20, if you are wrong, okay, if you are wrong, then you lose 20,000 rupees. Or if you are right, मीन्स अगर आपको 1% रिस्क के साथ आप कंफर्टेबल हो, सो आई रिकमेंडेड टेक 1% if you are beginner, and if you are so confident, then you can go to 2% if you are experienced trader. Okay, right? So I normally prefer 1% loss in each trade if I am wrong in this trade. Why I am wrong? बिकॉज कोई भी बंदा रॉन्ग हो सकता है ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी होली गलत स्ट्रेटेजी नहीं है. दैट इज फैक्ट, राइट? यू मे बी रॉन्ग बिकॉज मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स काम करता है एट टाइम. There are sentiment, news, emotions, algo trading, market manipulators, operators. So many people are working over there, and you will not 100% correctly predict based on chart pattern कि नहीं ये ट्रेड मेरा विन हो सकता है. So you understand the secret behind that, कि each and every trade has their own risk. Okay, and to mitigate that risk you have to predefine your risk, that is to be sure. And that's why we taking this, we are using this position sizing calculation, I mean. Okay, so 10 lakhs का आपका अगर है, okay, आपका portfolio, okay, whatever, if your portfolio 20 lakhs 50 lakhs 1 cr, there is no issue. You can decide, you may decide 0.5% loss if your portfolio is like 1 crore.
you may take this in that way. This is what I am trying, how I decide the maximum loss. That's what I'm sharing with you. Okay, so if my portfolio is a 10 lakhs, then I want to take the 1% risk, then it is a 10,000. So over here I just need to put the 10,000. Simple. It's so very simple, and it will decide how much share you need to buy. That is a 278 share you need to buy. So this calculator will tell you how much share you need to buy. You will not decide how much share you need to buy. So after watching this video, you will understand thoroughly कि किस तरह से ये सारी चीज काम करती है फ्रेंड. दिस कैलकुलेटर किस तरह से आपको ये कैलकुलेटर्स, मैंने नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पे जाके आप हाई कीजिए, वी कैन शेयर दिस कैलकुलेटर. ओके, एंड दिस कैलकुलेटर वी डिसाइड क्या किस तरह से आपकी पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करनी है आपको, बेस्ड ऑन योर एंट्री प्राइस एंड बेस्ड ऑन योर स्टॉप लॉस एंड बेस्ड ऑन योर मैक्सिमम लॉस. यस फ्रेंड. एंड उसके बाद जब आप शेयर बाय करते हो, लेटस से ये जो आपका डिफरेंस यहां पे है, सो इफ यू सी द डिफरेंस, दैट इज 36 rupees डिफरेंस ओवर हियर about the stop loss. This is what very interesting thing. Entry and SL and profit target, normally you have to decide based on the risk. Where let us say what I did, that normally I take the risk of 1 gem 2. So if I lose over here 36 point, I make 72 points. This 72 point, if you see over here, this is 36 point and this is the 72 point, nearly above. Okay, so if this share will goes to 800 rupees, nearly 800, then we'll exit the trade. We get the 10,000 is loss, we get the 20,000 in profit. Simple. So that's how the risk is managed. That's how you need to decide your number of share. And अगर आप wrong होते हो तो 36 multiply by आप ये करोगे, number of quantity karoge. Okay, and then this 10,000 will appear automatically over here. Okay, this 10,000 will appear if you multiply this number of shares multiply by this difference between these two things, which is 36 rupees. Okay, so you find this 10,000 rupees maximum loss in this trade. Okay, so that's how you need to calculate the your position sizing before entering any trade. Hope you clear that. होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे जाके आप हाई कीजिए, वी कैन गाइड यू एग्जैक्ट वे किस तरह से आप ये सारी चीज कर सकते हो. प्लस आपको कैलकुलेटर चाहिए तो भी आप वहां से हमारी टीम से मांग सकते हो. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. अभी तक हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. एंड लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.